हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आजकल फैशन है कि भाई आप हाई अचीवर्स को लेके आते हो इंटरव्यू के लिए। पीपल वो ऑलरेडी अचीव समथिंग और फिर वो ज्ञान देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। बट मैं जो अभी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें मैं यंग अचीवर्स को लेके आ रहा हूँ। मैं उन बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ जो आपकी जनरेशन के हैं, और ये बच्चे जो है फाइटर है। आज बात करूंगा आदित्य आर्या की। इज अ कैडेट फ्रॉम माई स्कूल, यानी कैडेट फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। बहुत जबरदस्त स्कूल है। 7 साल स्कूल में रहा, यही एक सपना देखा कि एनडीए ज्वाइन करना है। ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, गुड डिबेटर, क्विज मास्टर। स्कूल की हर एक्टिविटी में चैंपियन बच्चा आदित्य। क्लियर्ड एनडीए इन फर्स्ट चांस, स्कोर्ड मोर देन 600 आउट ऑफ 900। वेंट फॉर एसएसबी, फर्स्ट चांस। क्लियर्ड पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, फर्स्ट चांस, बट अनफॉर्चुनेटली गॉट मेडिकली रिजेक्टेड। सो द होल वर्ल्ड केम डाउन फॉलोइंग हिम कि मेडिकल में आप, उसका रिजल्ट आया एनडीए का, ऑल इंडिया रैंक 1। एनडीए ऑल इंडिया रैंक 1, एनडीए 144। आप सोचो वहां से, एंड सडनली देयर वाज कोविड, और पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी इस बच्चे की। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, देयर वाज नो प्लान बी। प्लान बी तब होता है ना जब आप कुछ सक्सेस ना करो तो, बट यहां तो सब कुछ ही वाज अचीविंग इन फर्स्ट चांस, ऑलवेज अ टॉपर इन स्कूल। And then he bounced back in life, and that is the story of this young boy. He bounced back in life, and during COVID, when people were disillusioned और पता नहीं था क्या हो रहा है, उस टाइम पे इसने अपनी लाइफ की सबसे तगड़ी फाइट मारी. Firstly, forgot his identity as an NDA cadet and now assumed a new identity. He rebuilt his life brick by brick and joined IIT Delhi. So now he's in IIT Delhi pursuing mathematics and computing, one of the top institutions in the world. So Aditya, what a pleasure to speak to you, and this story is for all of you. Please have plan B and please be ready to bounce back and hit harder when opportunity comes. Thank you. Jai Hind. So, hi Aditya Arya, what a pleasure to see you. Hello, sir. Good afternoon. Bangalore Military School, two different generations. Rashtriya Military School, Bangalore. When did you join the school? Sir, I joined the school in 2013. 2013? Yes, sir. In 6th standard? Yes, sir. And which year did you pass out? 2020. 2020. Okay, 2 years back. Yes, exactly. Okay. So you must have seen me when I came to the school in 2016. I saw you and I vividly remember the mesmerizing impact you had on the audience after it. Like, we were in 10th standard and I remember almost what all you told about your adventures, your school life, and what followed next. Like, it is a very good memory of ours. I know, very rare you get a chance to share candid memories and school ki badmashiyan, school ki, all kind of thing that my generation people did, or, we were lucky, never got caught in a major way, but pulled along. So great to see you. I recently, again, I went to school and again interacted with the class 11th, 12th boys, and good to see, and wonderful. So Aditya, tell me about your father was in the Air Force. Is Yes, just retired. Huh? Just tell me Yes, about sir. your family and your background. How did you land up in Rashtriya Military School, Bangalore? Okay, so my father was in Air Force, and like he had in his village or like in his neighbor and close contacts, and like someone who was in RMS Bangalore earlier. So he had got to know about our school from there, and he knew like this is a place where one would wish to send their kids, if not themselves, so that they would get to know the entire exposure which the school offers and everything. So other than that, like it's more or less defense background. My another uncle is also was in the Air Force. My mom is a homemaker, and I have a younger sister. She is too younger, like yeah. And so hence, like I was made to sit for the examination, saying that just try, like maybe you could get through. And though I had prepared seriously, I could get through. And in the last stages, it was like my mom was a bit doubtful whether I should go or not.
but I somehow said that I wish to go, and I joined the school eventually. How old were you that time? I was 11, if I remember. Yeah, 11 years old. Your time, the school started from 6, so you had 1 year advantage. When we joined, we started in 10-year-old, fifth standard. So school used to be 5th to 11th. But in my time, we saw it move from 11th to 12th. Okay, that's great. So you belong to which place? Sir, I'm from Bihar Sharif, Nalanda district in Bihar. But to be very frank, I have never stayed there for quite long. Like I was with my family, and we had to shift places throughout his service. So I have stayed in Delhi and in Nalia, that is near Bhuj in Gujarat. Yeah, I know. Nalia Airfield. Yeah, I know. and in Nashik, and then I was again back to Delhi. And after that, I came to school, and he also retired soon after that. Right So now, where I is live this? in Where are they right now I settled? live in Mumbai. They live in Mumbai. Yes, right now Mumbai. So that's good. No, this is typical of all military kids, Fauji kids. We are incidentally born somewhere, but our kismat takes us to various places, then to military school, and then Fauj, or pata nahi kahan kahan, hai na? So, so I believe you have been a very good student in school. That is what I hear कि आदित्य आर्या ने स्कूल में तो तुम क्या हमेशा फर्स्ट आते थे अपनी क्लास में? Yes, to put it straight, I was good in academics a lot in school, and I was in top three like most of the time. यार बट हमारे टाइम पे जो टॉपर होते थे वो मतलब हमारे यहाँ 60% टॉपर होता था. इनफैक्ट very dear friend of mine retired as Major General Kabindra Singh, who used to generally top our class, was about 61-62%. तो इतना वो craze of getting 90 plus and all started much later. And topper and bottom के बीच में ज्यादा gap नहीं होता था. And all of us played sports. He was a very good athlete. Most of the guys were good in athletics or football, hockey, some game or the other. So what did you, other than studies, what did you do in school? What did you excel in? Other than studies, I was very active in co-curricular activities. In fact, I was the co-curricular activities captain when I was in class 12. And I also played sports, basketball and volleyball. And that is what, like, the everything what school offers you. I was kind of involved everywhere, tried to be in most places. Like like whatever the school gave, be it sports, be it co-curricular activities, be it inter-school competitions, for that sake, I tried to like do everything. Academics was just a part of it, if I say. That's nice, because मैं ये मानता हूँ यार, अगर बोर्डिंग में अगर इतने नंबर ले रहे हैं बच्चा, अगर घर में होता तो you would have got more than 100% marks in everything, because स्कूल में डिबेट है, एलोक्यूशन है, पीटी है, ड्रिल है, कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को शायद he would probably do well. So how did you cope up between school and studies and these activities? Sir, half of it was done by the school itself, because the school had a clear laid out routine for everything. Like morning, you would definitely have PT and drill. In classes time, you'll have classes. In games, you'll have games and all. You know better than all of us. And so what the other half, what I did was I managed my time very effectively. Like when I was studying, when I was in class, I was studying. When I was in games, I was playing. When I was in PT, I was giving my best to everything what was being done there. So I tried to do my best at that moment itself, so as to leave very little for other time. Like I didn't have to take out time for a particular activity always. Like in fact, I and my classmates very vividly remember that I would go to bed very early, having nothing to do at night because I was too tired to do of anything. The Yeah. entire day would go in running here and there. So that is how I managed my time. Like till 12th, this was the sole mantra which I followed. That is the mantra of your success. No wonder you are in IIT Delhi. You are an All India rank topper, #1 rank in NDA. So this is not a ordinary kind of an achievement. This is extraordinary. So now I see difference between you and me. हम जब क्लास में होते थे हम खेलने का सोच रहे होते थे और and many times our mind was certainly not in the class, certainly not in maths and some of the classes and all.
But okay, tell me about the inter-school. You mentioned something about inter-school. So what events did you represent the school and what kind of experience you had? I was mostly involved in debating and quizzing. So I represented my school at various positions for both activities, and was even fortunate to bring laurels to the school at numerous occasions for the same. बताओ जरा बताओ. हमारे टाइम पे एक भाटिया शील्ड होती थी इंटर स्कूल डिबेट, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होती थी. Yes. And So yeah, speaking of Bhatia Shield, like I represented the school in both 11th and 12th, and we won it both here, fortunately. what was the topic? बताओ जरा. Topic, sir, I don't remember exact statement. Once it was regarding impact of social media on students, and the social media and mobiles, like tech something. Tech, and yeah, and the previous year I don't remember exactly. So but yeah, representing school in debate and quizzes, really high point, and must have given you a lot of satisfaction and happiness. Huh? Great. Yes. Wearing school blazer and a tie and standing on the rostrum is, you know, no amount of credit card can buy you that pleasure. Exactly, sir. True. Great. Aditya, अच्छा ये बताओ, how did you, I don't want strategy and all, but ये बताओ तुमने NDA के लिए, now will come to NDA, तो बहुत से बच्चे देखेंगे कि how did you clear the return? तेरे लिए तो मतलब it was a cakewalk, or did you make some effort to clear your NDA written exam? Sir, to be very honest, it was not a cakewalk either, because effort लगता है, be it anyone, be it one who has been consistent through the years in academics, be it someone who has not been, it is a level playing field for everyone. Because जो subjects आते हैं 12th में, it is all the things under the sun, you can say. Like science के भी subjects हैं, social sciences के भी हैं, English भी है, mathematics भी है. So one has to prepare everything, and being all science students, there is, and even the science which comes, the physics and chemistry portion, that is not very related to 11th or 12th. So in that sense, it is like effort taking for everyone. But a certain advantage I had was that yes, I could recall things effectively because I had studied them very well in the past. So that was a plus point I might have had. But otherwise, I started prep like when everyone starts, and had to put in like the same dedicated efforts throughout. So did you help other friends also? तेरी क्लास के कुछ थे जो, because हमारे स्कूल में देखा कल्चर ही है, ग्रुप बन जाता है जो सीरियस एनडी एस्पायरेंट होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो तुमने किया अपने कुछ, क्या रिजल्ट था तुम्हारी क्लास में हमारे स्कूल का? Sir, that goes without saying कि help तो होती ही है साथ में, and not to take any credit of anyone else, but जो All India Rank 4 है वो भी मेरे हाउस का ही हाउस कैप्टन था. So we all most of the time, not most but yeah, हम साथ में वही जो एक सर्कल रहता है जो आपस में एक दूसरे को रेफर करता है, लुक अप टू करता है, एक दूसरे के लिए मतलब बी हेल्प ऑफ whenever it is like mock tests होते हैं, तो mock test का analysis review जब साथ में बैठ के करते हैं तब पता चलता है कि okay, like I thought of this और दूसरे ने ये सोचा, and he could do that way. So next time what I need to keep in mind to do that way, वो सब चीजें we learn from others, and that is how like दूसरे की भी हेल्प हो जाती है, हम भी आगे बढ़ जाते हैं. So when you came back after the written exam, अच्छा तुम्हारी क्लास में कितने पास हुए थे? Not remembering the exact number, but it was more than 20, I guess 22 or something. That's very good. Yeah, that's very good. So when you came back after giving, तूने बैंगलोर में दिया था एग्जाम या घर पे? Yes sir, बैंगलोर में था. बैंगलोर में, very good. So did you come back and you कितने आए तुम्हारे, what, how much did you score in return? Sir, I scored 602. 602. Oh, that's very good. Yes. 602. Anything beyond 600, I think, is an excellent score for NDA. Yes, that way it's a good score. But when I came back from my examination, like वो होता ही है, दोस्त वगैरह ले आते हैं आंसर कीज वगैरह इस वेबसाइट से उस वेबसाइट से, and they start cross verifying everything. पहले दिन तो मैंने उस दिन कुछ नहीं किया. I thought नहीं, I don't want any like any review imposed upon me. I am happy whatever I did with. आराम से सोया उस दिन. Next day I didn't want to discuss, but वो अंदर से आ ही जाता है, सब लोग साथ में बैठ के सामने पता कर लो. हाँ, they are discussing questions, वो कर रहे हैं, तो फिर I also thought okay, let me also have a look.
I was getting 550, 560 according to those answer keys. So that is where like I looked up to one or two answer keys, फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है देखते हैं जो आएगा सो आएगा. Apparently वो answer keys गलत थी. हाँ वही ना, they were wrong. That's why he scored 602. That's very good. और फिर एसएसबी के लिए क्या तैयारी करी आपने स्कूल में रहते हुए? Yes sir. So talking of SSB, वो तो एक continuous process होता है कि एक पर्सन की एकेडमिक डेवलपमेंट तो अलग है, बट उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे स्कूल में होती है, वो किन किन एक्टिविटीज में जाता है, किन किन लीडरशिप पोजीशंस पे अपने आप को एग्जिबिट करता है, अपने आप को सीखता है, एंड ऑल व्हाट इंटरपर्सनल स्किल्स यू लर्न इन स्कूल, वो सब चीजें तो एसएसबी में थी ही, एंड दैट इज द कोर थिंग व्हिच इज बीइंग टेस्टेड एट एसएसबी. सो वो चीजें तो आई फील वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय स्कूल. And I was active in debating circle, so I was good in communication skills also. That way, I was a bit prepared for SSB. Other than that, I used to read newspaper regularly. Like in 12th, I used to read newspaper every day, even till NDA written was there. Like the days before NDA written, people would generally neglect it कि यार ये क्यों पढ़ना, इससे तो कुछ अभी नहीं आएगा, बाद में SSB टाइम पे हम लोग इसका पूरा समरी पढ़ लेंगे एक बार में, and we have to give a talk of just 3-4 minutes, वो summary में हो जाएगा. But I had this affinity with newspaper, so मैं पढ़ते ही रहता था. So that is important in fact, and like these things would make up a good chunk of SSB, I guess. Yeah, I know. यहाँ we touch a common chord, Aditya. Debating तो थी, मुझे बहुत शौक था, but paper पढ़ने का भी I have this affinity with newspapers. Say if I go out for 4 or 5 days, so everyone in the house knows, even the maid knows कि papers have to be placed on the dining table, and I'll after I unpack myself, first thing is I'll go through each paper again. Even now, that there is something that's really amazing, and I can understand that. हाँ, अभी भी मुझे ना, जैसे कल मैं ये किशन ने बहुत बिजी रखा, मैं इधर उधर तो हो रहा, मैं पेपर नहीं, तो सुबह ना मेरी वाइफ कह रही है, तो ये यार कब का पेपर है, मैंने कल का है, कहता आज का नहीं है, मैंने कहा मैंने जान करके उठाया नहीं, पहले आई वांट टू रीड दिस पेपर. इनफैक्ट सर आई स्टिल रिमेंबर जो संडे को जो संडे एडिशन आता है, लाइक वी यूज्ड टू रीड द हिंदू, that I used to sit in the morning 9 o'clock, and वो पेपर भी बड़ा होता है, it has a Sunday magazine also attached to it, जिसमें पूरे वीक का अच्छे से दिया रहता है. It would go on till 1 at times. 9 to 1 I was reading newspaper only. It used to be very like I used to feel very happy, but also at times bit terrified कि पेपर ही पढ़ते रह गया पूरे दिन, बाकी चीजें भी करनी है. मैं इतना ही पढ़ता था. हम लोग क्या करते थे, संडे को हमारे टाइम पे ना paper was really a luxury, but school library, of course, you know, school library में papers आते थे, and my love for library, you know. So वो जो रेडियो रूम के पीछे एक स्टेप्स हैं, थोड़ी सी एक सीढ़ी है लोहे की, और कुछ स्टेप्स हैं. पहले हमारी लाइब्रेरी वहां होती थी, एक नोटिस बोर्ड होता था जहाँ डेली की न्यूज बच्चे को टास्क होता था, लिखते थे. तो संडे को मॉर्निंग में, उस दिन पीटी नहीं होती थी, तो जो भी थोड़ा बहुत बास्केटबॉल वगैरह खेल कूल के ब्रेकफास्ट से पहले ना, आई यूज्ड टू बी सिटिंग देयर वेटिंग फॉर दैट न्यूज़पेपर गाय to come and put the paper. वो नीचे डालता था अखबार, so papers used to go inside, so you have to catch him before he can roll the papers inside. और हमें ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स का, तो पूरा इंडिया की हॉकी टीम ने क्या किया, एवरी स्पोर्ट, एवरी, सबसे पहले पूरा चाटना स्पोर्ट्स का. and we used to get the Hindu and this Deccan Herald. Deccan Herald was a very good newspaper. Yes, and those time की जो, हाँ, फिर बाकी भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत इंडिया की भी इमरजेंसी ट्रेन स्ट्राइक, ये वो सब भी पढ़ते थे. बट संडे को वो देन वी वर वेरी केयरफुल, यू हैव टू रोल बैक, अदरवाइज नेक्स्ट संडे विल नॉट गिव यू, इफ ही गेट्स अ कंप्लेंट कि ये पेपर मंडे को अगर बोल दिया उसको तेरा तो पेपर नहीं आया, फिर ही विल नॉट. सो दैट वाज द गिफ्ट फ्रॉम द स्कूल. आई थिंक वी वर लकी. अगर घर में होते शायद नहीं, इतना प्यार नहीं होता अखबार से ना. Exactly. तो फिर we were on SSB. I know you cracked the SSB and you got All India rank 1. So ये तो बहुत बड़ी बात है आदित्य. मतलब how did you must have reached a point of elation, parents वगैरह. I can imagine हमारी सोसाइटी में कितनी बड़ी चीज है कि पेरेंट्स ने इतने साल पहले सपना लिया कि बच्चे को अफसर बनाना है, and you cracked it, you know.
So थोड़ा सा SSB का एक्सपीरियंस बताओगे? Whatever. Yes, so my SSB was in January 2020 to AFSB Mysore. I was an Air Force candidate. तो मतलब I had like जो preparation तो बताई दी, like the like जो when we went there, the screening was वही जो PPDT OIR, that was we had prepared, and like people generally prepare for PPDT and everything well in advance. So that was a nice, like it went out well. So then जो SSB का procedure start हुआ, so I knew that and the thing was with Air Force SSB was that जिस दिन screening हुई, the same day in evening we had psych test. So we were a bit like I was actually a bit tired, like waking up 4 o'clock in the morning, उसके बाद लाइन में लगो, ये वो 2 बार बैग उठाओ रखो, बाद में PPDT दो, OIR दो, आओ लंच करो, then they would made you stand and would announce the result, would again take you for briefing and then take you to rooms and then again to psych test. I was a little tired that ठीक है, and in fact I was knowing कि इसमें कितना लिखना पड़ता है, the amount of strain it puts on you is a bit. So what all came in my mind जो tad tha, like it came out, the pictures I could connect it with certain incidents of my life, or to some things, some issues, or some stories which I could think of that time. I say so I could write them all. It was a decent one. I didn't miss any story. One story was half finished, so that was a issue which I had, and blank story bhi theek thi. Then in SRTs, my target was to like do every SRT in a detailed manner, but बहुत detail में भी नहीं जाना, so that I miss out on a lot of SRTs. So that way वो speed और consistency मिला के 45 हो गए थे. So I was quite contented कि हाँ SRTs, and I also knew the responses, they were up to the mark, what I had wanted from myself at least. Then WAT also एक दो नहीं, like 1 or 2 maybe would have missed, but last में कर दिया था before submitting, and it was a full sheet given. Self description, I was like the time given in self description is very less. It is only 15 minutes. So I had prepared like I had in my mind what to write. I knew what, like everyone does generally know what to write. तो वो लिख दिया. And psych test was decent in that way. अब उससे ज्यादा तो पता नहीं होता है कि psych test में क्या हुआ. हमें बस अपना देना होता है best, like what we can do at our level. Then GTO tasks were like कुछ अच्छे, कुछ moderate-ish, जिसमें तो वो वैसा था, balances था. Like some places you wished you could have done better. ऐसे करके feeling आती थी, तो अगले वाला अच्छा चल जाता था automatically. Like फिर उसके बाद GTO was that way. GD, what about GD? There you must have done well, being a debater and Bangalore. I did well in like all these speaking events. जैसे GD है, I had good amount of points, and also the things like I was a bit like I was used to all of that, as you already said. So GD अच्छा गया, and lecturate was also good, and GPE was also decent. Group planning exercise. तो वो सब चीजें अच्छी थी, and जो obstacles वगैरह. हाँ, interview was like मतलब जैसे ही I was quite confident कि I have to do good because I can. तो जैसे ही मैं अंदर गया, we had been like we knew that कि जब जाते हैं तो वो पहले कुछ वो करते हैं ना, ice breaking questions करते हैं, that they will ask कि कहाँ से आए हो, क्या कैसे आए वगैरह वगैरह, so that repo set हो जाए, and then they come up. The moment I sat, the first question he asked me, why do people from RMS, not everyone joins NDA and IMA and all. So I was taken aback कि ये क्वेश्चन मैंने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, भले बाद में मेरे को पूछा जा सकता. So I was like ठीक है, जो मेरे दिमाग में आया, I just said, sir, actually what happens is not everyone utilizes all opportunities given to them. And he said, okay, so what about you? I said, sir, I have utilized most of the opportunities. Then he laughed. And after that, it went the same way. Like they ask about your, first of all, your environment, your friends, your family, और बाकी चीजों के बारे में, टीचर्स, पेरेंट्स, सबके कुछ अच्छे गुण, कुछ बुरे गुण जो वो बोलते ही हैं. जो फिर उसके बाद they came up to PIQ में जो एक्टिविटीज लिस्टेड थी उनके बारे में, जो पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके बारे में पूछा.
and they kept on asking. फिर बहुत drilling की in the at one point, like they started asking बहुत random or to the point questions की, okay, tell me what were the worst incidences in each sport, like जो जितने sport लिखे हैं सबके worst incidences, like the most troublesome situation you have faced in all the positions of responsibilities you have had. तो yeah, so ये सब impromptu था, like one does not have always in his mind. ये तो जो वहाँ पे पूछा है and what you honestly have experienced in your life, वो सब बताया. And then a part of it was GK and questions about Indian Air Force or and all. तो इंटरव्यू स्टार्टिंग में लगा it was I am controlling it, but in the end जैसे जैसे उनके questions आ रहे थे, फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कर मतलब अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं बस कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आई एम पुटिंग इट स्ट्रेट, पुटिंग इट फॉरवर्ड. इंटरव्यू चला लाइक अराउंड 35 to 40 minutes and I was set to leave. And while coming back I was wondering कि कैसा गया, मतलब ये जाना ऐसे ही चाहिए था या फिर से देना पड़ेगा. तो as like it was all in all यही था. What about you appeared for PABT and CPSS and all? वो उसके बारे में बताओ, what experience you had? हाँ, so CPSS was the next day after conference. तो क्या होता है? हाँ, so उसमें I didn't know anything and no one knows anything before that. So CPSS is in two stages. CPSS stage 1 and stage 2. Stage 1 में they'll like teach about the more जो meters होते हैं, altimeter और ये सब, not very vividly, I also remember in 2 years. वो कुछ meters के बारे में पढ़ाते हैं. They ask questions of it. Online test होता है. And they also ask some logical questions, reasoning के, कुछ mathematical, कुछ pattern based ऐसे ऐसे कुछ questions होते हैं. So that no scores वगैरह कुछ पता नहीं चलता है. Like they give the test. वो test देने के बाद in the afternoon, like it happens in the morning, afternoon में result आएगा. Okay, so these people have to report for stage 2. Stage 2 you have to sit in a cockpit. Like it's a वही डेमो कॉकपिट रहता है एंड उसमें स्क्रीन रहती है. वी हैव गियर्स, 2 गियर्स, लाइक सॉरी 1 गियर जो वो उसका कार वाला होता है एंड 2 फुट पेडल्स. सो देयर आर गेम्स एज जो पता ही है कि गेम्स खेलने होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज बिफोर यू गो टू द कॉकपिट देयर इज अ प्रॉपर ब्रीफिंग. सब खड़े होते हैं एंड देयर इज अ ब्रीफिंग अबाउट ईच गेम. हर गेम के इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं. दोस गेम्स आर सेट टू टेस्ट योर साइकोमोटर स्किल्स एंड एवरीथिंग. तो एक एडवाइस मैं सबको बताना चाहूंगा, इनफैक्ट एक ग्राउंड रूल है, that listen to each and every rule properly, because if that point you are thinking of something else or maybe worried about what will happen next, nothing of that would matter. तुम जो कर सकते हो उस चीज को सुन सकते हो and that is very important. होता क्या है, we listen to till 6th 7th game and last का 1-2 गेम तो पता ही नहीं चलता. We are like just looking around, cockpit देख के डर लग जाता है क्या होगा, I don't know, will I be able to make it or not, once in a lifetime test है, ऐसे ऐसे. एंड तो वो अपने नर्व्स को ठंडा करके पहले सारे रूल्स सुन लो, सारे गेम्स की चीजें जो भी चीजें वो बता रहे हैं सब सुन लो. then we went to the cockpit, we had our seat. then उसमें होता क्या है कि like all the games which come up, the pedal जो foot pedal होते हैं, left pedal and right pedal are used for moving our cursor horizontally, and जो gear होता है, down gear, up gear is used for moving the cursor vertically. And in all the in some of the games you have to move the cursor around, so you need to have hand eye coordination कि horizontal के लिए पैर है but vertical के लिए हाथ है. and you also have वैसे और games आते रहते हैं. It's like the first game they'll give you a try run, वो instruction के बाद वो एक try run देते हैं, then 3 trials होते हैं, and after that you go to the second game, you go to the third game, फिर ऐसे जितने like 10 or 12 something games are there, वो खत्म होके CPSS is over. like वो games खेलने होते हैं, you have to do best what you can in those 3 trials. तो उसमें भी कुछ पता नहीं चलता है how well you have done. like whenever सब जब बाहर निकलते हैं सबको लगता है हमने तो बहुत ही बुरा किया, हमें तो समझ ही नहीं आया गेम था. एंड इन फैक्ट सम केसेस में होता भी है कि हमें इंस्ट्रक्शन तो ट्रायल्स करने के बाद समझ में आते हैं, अच्छा ऐसे करना था. so that is why I tell कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना अच्छे से and be composed पूरा, कि मतलब you have to just play a game, take it like that, and that is when तुम सही से खेल पाओगे. so I gave it जैसे देना था and I could clear that. I was fortunate enough.
Very good. And what about PABT? That is the same. Actually, PABT Okay. is now replaced by CPSS. Okay, excellent. So you cleared that also. And Yes, sir. then when did they announce your result, or how did you inform your parents? That evening, CPSS, actually, मैंने बता दिया था 5th day that I have been recommended. So they were like, that's nice. But I also told them, अभी रुक जाओ, CPSS भी है. So अगले दिन CPSS का result came in the evening, and I told that I am thoroughly done with it. सब हो गया है. And so that's when they were very happy. And then I came back to school. उनसे सीधी मुलाकात तो नहीं हुई because I was in school then January में. And it was good to see everyone like welcoming wholeheartedly. सब होके आए. Acha. Then Aditya, when did you come to know? अच्छा चलो पहले मेडिकल यू वेंट मेडिकल कहाँ हुआ आपका बैंगलोर हुआ वहीं पे हुआ था? Yes, I am Bangalore. हाँ कमांड हॉस्पिटल में? नहीं सर, IAM वो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन. अच्छा ओके हाँ. ओके. So did you have any inclination that medical could be a stumbling block? एक्चुअली वही हुआ था कि मार्च 2020 हमारे 12th खत्म हुआ एंड कोविड वेव के घर आ गया. उसके बाद 3-4 महीने तक मेरा मेडिकल पोस्टपोन होते रहा. तो मैं घर पे बैठा आराम करता, थोड़ा कभी सोचता कि क्या मेडिकल में कुछ हो ये वो. एंड आई वाज अ बिट केयरफुल कि नहीं मे बी ठीक है, लाइक एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स सी क्या होता है. बट आई हैड नो अदर थॉट्स आल्सो कि नहीं होगा ये वो. आई वाज पॉजिटिव इन दैट वे. या मिलिट्री स्कूल में तो मेडिकल की कोई इशू नहीं होती है, सब भागते दौड़ते रहते हैं. हाँ, यस सेम. जब मेडिकल मेरा हुआ था इन मंथ ऑफ पायलट का मेडिकल कुछ ज्यादा हार्ड भी होता है, कुछ ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं. यस, पैरामीटर ज्यादा है. तो जुलाई में आई वेंट फॉर 1st of July आई वेंट फॉर दिस माय मेडिकल. दैट टाइम आई वेंट टू नो दैट आई वाज मेडिकली अनफिट halfway through the year. They told you? Yes, I was told that I was medically unfit and could not join. So first reaction must be shocking, and I can imagine young boy, इतना सपना, इतने साल स्कूल में रहे, एनडीए जाना है और सब कुछ हो गया. तो how did you take it and how did your parents take it? That was very difficult actually for everyone. I was devastated. I like because सब ऐसा हुआ था, we were always sitting for our medical review. जो मतलब जो आना था रिजल्ट, सबकी फाइलें आ गई, मेरी फाइल नहीं आई. I had this feeling कि something is not good, कुछ तो दिक्कत है. And further I was told कि नहीं हुआ. I was very sad. वही उसके बाद घर वार पे फोन किया. Like everyone was very shocked that this wasn't expected at all. Yeah, because this was a shocker. This was a pure shocker, and I was more dumb at the fact कि अब क्या, what next. It is July 2020. आधा साल निकल चुका है. तुमने 12th के बाद 3 महीने घर पे आराम किया है क्योंकि तुम्हें पता था तुम जाने वाले एनडीओ. And like what next? There is I was like looking at abyss. सामने खाई है. I didn't know anything what to do. So at that point of time I was just dialing people, telling them कि अच्छा मैंने बताया था, like I had come for medical, so I was telling them नहीं हुआ and was consoling थोड़ा जो वो बता रहे थे. Like I went back home. So it was tough for everyone. It took time for everyone to realize कि this has actually happened. That even after clearing written SSB, CPSS and everything, doing well at all places I could do of, बाद में दिक्कत आ गई. और वो चीज, तुम्हारे कोई प्लान भी था तुम्हारे माइंड में इस दौरान कि भी कॉलेज में जाना है, आईआईटी में, जेई में, कहाँ क्या था तुम्हारा प्लान बी हैड आई लाइक अगर मैं स्कूल में पूछता कि प्लान बी तुम्हारा क्या था, आई हैड इन माइंड कि अगर मेरे नहीं होगा लाइक आई विल ट्राई फॉर जेई, 1 साल कोटा वोटा चल जाऊंगा, आई विल प्रिपेयर माय बेस्ट एंड वुड सेल थ्रू. बट मेरा प्लान बी वहां पे प्लान बी नहीं रहा बिकॉज आई वाज थिंकिंग दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड एरा. Quota had been shut down and people had moved online. And second thing was I could not join any coaching क्योंकि जो कोचिंग चालू हो रखी है they are midway और वो आगे आ चुके हैं सिलेबस में. मैं बीच में नहीं ज्वाइन कर सकता. तो मेरा प्लान बी रहा नहीं क्योंकि वो जुलाई में मुझे न्यूज मिली. एंड आई डिडंट नो कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो किस में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा. तब उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला था एंड आई हैड डिसेंट मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड. So I thought I'll try for Delhi University. I'll join a BSc program
and I will do my further studies there. तो first like step of action after like थोड़ा अपने आप को ठंडा करके, because at that point of time you don't wish कि तुम्हारा कोई भी decision एंगर या फिर सैडनेस Yeah. वैसे में हो। तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया था एंड it was also delayed a bit, थोड़ा डिले हो गया, अगस्त में चला गया। till August I like finally found my way to Hindu College in Delhi University and this is August 2020। तो हिंदू कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था, लाइक क्लासेस वर अगेन ऑनलाइन। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर वही है, उसके आगे फिर मैं करते रहा। आई हैड एवरीथिंग रनिंग अराउंड इन माय माइंड कि आईआईटी का एग्जाम देना है कि नहीं देना है, मे बी आई कैन जस्ट गिव जेईई मेंस, गो टू एनआईटी। आईआईटी नहीं तो क्या हुआ, मैं एनआईटी चले जाता हूँ। लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे लगता था जो करना है वो तो हुआ नहीं, एंड डिस्पाइट ऑल माय एफर्ट्स कभी कभी बुरा भी लगता था कि अब मैं क्या ही करूंगा, इवन इफ आई गिव माय बेस्ट हु नोज हो ना हो। लाइक व्हेन आई थिंक ऑफ लाइक चलो जेईई मेंस देते हैं, एडवांस देते हैं, फर्स्ट ऑफ द थिंग वुड कम कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुम साल के बीच में हो। सेकंड थिंग वाज सब कुछ कर लिया फिर भी क्या पता नहीं हो कुछ वजह से। इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। I can understand. I can understand. I can realize this. COVID made it worse. और ऊपर से as crescendo पे पहुंच के you're on the just about to touch Mount Everest and then somebody tells you turn back now. It is that close to lifelong ambition. So I understand that. But this is also resilience that school teaches and the military life teaches to get back. And this is not a failure in your case. ना तुम तो fail हुए नहीं, it is just some medical issue कि आप नहीं clear कर पाए, which is not in your hands, nobody's hands. So how did you bounce back and how did you join IIT Delhi? ये बताओ जरा. This is very interesting. I would love to tell this because what happened next कि एक महीना डेढ़ महीना चल रहा था मेरा IIT Delhi University में ऑनलाइन क्लासेस। I was half minded whether मुझे यहाँ कंटिन्यू करना है कि नहीं, half minded whether I should do anything, half minded whether should I do anything at all. तब when I saw that probably I should give a chance at JEE mains, छोड़ो मेंस दो, will try, क्योंकि 11th 12th में पढ़ाई की थी, I think I can make it up, just I had in my mind. So I started a little bit preparing थोड़ा ऐसे करके in September end 2020, September end, and the exam was scheduled for I'll come to the exam also. So September की बात है, September 2020 में मैंने थोड़ा बहुत खुद से सेल्फ स्टडी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग थोड़ा थोड़ा करके। देन आई थॉट कि ऐसे नहीं चलेगा, लाइक बीइंग इन डीयू एंड आल्सो स्टडीइंग, और उधर की भी चीजें दे आल्सो हैड देयर ओन टास्क्स। सो आई ड्रॉप्ड आउट, मैंने वहां से टीसी ले ली एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वुड सिट फॉर जेईई मेंस। मैंने जेईई मेंस बोला था, एनआईटी जाना मेरा सपना था तब। उस वक्त पे मेरा मैक्सिमम सपना एनआईटी का ही था एंड आई थॉट कि पढ़ेंगे, जेईई मेंस क्लियर करेंगे, एनआईटी जाएंगे। एंड आई वाज सिटिंग एट होम, ऑनलाइन पढ़ रहा था, यूट्यूब से पढ़ रहा था, दूसरे सोर्सेस से पढ़ रहा था, जितना भी मुझे पढ़ाई के बारे में पता था मैं उससे खुद ही से पढ़ रहा था। आई हैड नो पीयर ग्रुप, no friends, no teachers in JEE circle, and otherwise also I was not very active in those time. धीरे धीरे करना शुरू किया। अक्टूबर 2020 was time when I took TC, started everything. तब एक गुड न्यूज आई इन दैट रिस्पेक्ट कि जेईई मेंस जो दो बार होता था साल में, वो कोविड की वजह से 4 बार हो रहा है। सो दैट वाज अ गुड न्यूज कि मेरे पास अब 4 अटेम्प्ट्स हैं एंड बेस्ट आउट ऑफ 4 वुड बी काउंटेड। पहला अटेम्प्ट था February 21 में एंड दिस वाज October 20। तब आई हैड 4 months, 4 और 4.5 पहला मेंस अटेम्प्ट में। सो आई गिव इट माय ऑल, मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने जितना कर सकता था, मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, whatever was possible at my level, I did everything. मतलब मैंने महीने महीने में साल पूरी बुक खत्म की इस तरह करके, so that and even practice mock test, जो एक लिबर्टी होती है, like if you finish syllabus you go to mock test, but मेरे पास टाइम कम था, so I used to give mock test and learn reverse, जैसे उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनसे सीखता था फिर, and that was like the smart work I could learn from school. फाइट बैक एटीट्यूड तो था स्कूल से कि नहीं, गिव अप ऐसे नहीं होगा, लाइक देयर इज समथिंग इन मी व्हिच विल डेफिनेटली कम आउट, आई जस्ट हैव टू गिव माय बेस्ट। आई सैट फॉर द एग्जाम इन February, 4 महीने की तैयारी में इट वाज अ वेरी स्पेक्टेकुलर रिजल्ट। 4 महीने की तैयारी के हिसाब से व्हाट पीपल डू इन 2 to 4 years, I did a lot of it in 4 months, 5 months, and
I was very happy at the end of it. This is February. amazing, Aditya. That too coming from a cadet from Rashtriya Military School, and 4 months mein you did what people do 2 to 4 years. Amazing. What result did you get in that? Sir, that is actually percentile system in JEE Mains. I got 99.2 percentile in February attempt, and I knew और attempts हैं आगे, 3 और attempt है. All I had in my mind was कि अब मेरे को अगले attempts में improve करना है, so that I what knows like I can go even higher. And बैक साइड में वही कोविड आ रहा था, जा रहा था, ये सब चीजें चल रही थी. सो सेकंड अटेम्प्ट मार्च में हुआ. इट वाज ओनली 10 days 15 days अपार्ट, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट उतना ही था. बट देन केम अप्रैल में आया कोविड सेकंड वेव, व्हिच वाज वेरी डिजास्टरस फॉर Devastating, I know, very devastating. सो बिकॉज ऑफ दैट जेईई मेन के जो 2 अटेम्प्ट थे वो पोस्टपोन हुए, एंड जेईई एडवांस जो आईआईटीज के लिए एडमिशन है, जो जून में समवेयर अराउंड शेड्यूल था, वो भी पोस्टपोन हो गया. And that time it struck me कि ये वक्त है गियर बदलने का. Like NIT is not the dream for me anymore. अब मुझे IIT जाना है. Great. And that time I barely stood on one leg. दोनों पैर पे खड़ा भी नहीं हुआ था. I barely stood on one leg. I thought that this is the moment I would go for like IIT. And my parents were like, ठीक है, if you want to, if you wish to change gears, it's okay. If you like, they saw that I wanted to do it. And luckily at that time I got help of good online resources. I was enrolled into a crash course program for JEE Advanced. उस वक्त that was a crash course again. 3 महीने में syllabus वो revise करवाते थे. I joined that course. वो revise करवाते थे. I used to study in the morning और शाम में revise करता था उन सबके साथ. And this was repeat. 3 महीने में वो crash course में revise किए, मैंने syllabus finish किया JEE Advanced के लिए. I did everything like वो, and this is also keeping in mind that negativity बहुत ही आसपास, कोविड वेव था, like lots of this news that news, even seeing घर के आसपास फैमिली में like सबके घर में वही स्थिति थी, like you see somewhere neighbor में I know किसी ना किसी कोई ना कोई मर रहा था. Everybody had some tragedy or the other. And that point of time I made it very clear, कुछ भी हो मैं बैठूंगा अपने रूम में. I would make it up for 8 to 10 hours, whatever it is for me. कहाँ पर थे तुम all this time? Where were you stationed? I was in Mumbai at my home. I was given a room to my own. ये ले तेरा रूम, तू ये ले, खुश रह, इसमें जो करना है कर. And my parents were very accommodative in that nature. उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटीज दी जो मैं चाहता था, और मैं उन सब से डिटैच हो गया था बिल्कुल भी बाकी अदर सराउंडिंग से. I wanted to just give my best. And this is the time, this is a turning point I would say. बाकी जो serious aspirants थे IIT के, जो सालों से पढ़ रहे थे, वो इस कोविड टाइम पे मेंटल स्ट्रेस में ना वो थोड़े डिसइल्यूजन हो गए, भटक गए. मतलब कोविड वेव आ गया, वो थोड़े सैड हो गए. तो कहने की बात यह है कि you have to, in adversity, how do you find challenge and use it to your advantage? Yes, exactly. है ना. मैं तो कोविड का ना, लोग इतना रो रहे थे, मैं तो हमेशा कहता रहा, नहीं यार हमने तो कोविड में बहुत अच्छा किया. हमने कोविड में अपना YouTube चैनल लॉन्च कर दिया आदित्य. एग्जैक्टली सर, हमारी तो लाइफ चेंज हुई कोविड में यार. तो कोविड, बिकॉज कोविड इज देयर, मतलब ऐसी कोई भी बाद में भी कुछ होता है जो थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर हैंड्स ना, यू कांट डू एनीथिंग. नाउ दैट इज अ चैलेंज. हाउ डू यू अडैप्ट टू इट, है ना. कैसे आप फाइट मारते हो अभी और उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करते हो. चलो, वेरी इंटरेस्टिंग. फिर क्या हुआ? So like that was the time मेरे लिए जो positives में convert होना शुरू हुआ. Like people were losing focus. लोग का study hours कम हो रहा था. लोग हताश हो रहे थे. तुम्हारा ग्राफ ऊपर जा रहा था. मेरा ग्राफ ever increasing था तब. But still the thing was कि मेरे साथ एक दिक्कत बहुत थी, because मेरी preparation random थी बहुत. इधर से उठा के पढ़ लिया, उधर से उठा के पढ़ लिया. I was doing things upon myself. जैसे मुझे मन के मैं पढ़ रहा था. मतलब कोई सिस्टमैटिक, कोई सिस्टम नहीं था उसमें. सिस्टम था बट मेरा मन माना था. मतलब जैसे लोग पढ़ते हैं ब्रिक बाय ब्रिक, तो उस वे में सिस्टमैटिक नहीं था कि मैं ब्रिक के बाद 2 ब्रिक जंप कर देता था, बिकॉज आई हैड लेस टाइम. उस वे में सिस्टम नहीं था. एंड दिस आई थॉट फॉर माई सेल्फ कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा, आउट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट मुझे करना पड़ेगा. एंड इसकी वजह से एक दिक्कत ये आ रही थी, बिकॉज मैं मेहनत कर रहा था बट मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो ब्रिक बाय ब्रिक लग नहीं रहा था इन ऑर्डर, और वो घर आउटपुट नहीं दे रहा था सही से. So this was also like, it's not कि मैं all this time I was preparing, I was getting positive impact. ऐसा feedback positive मिला ही नहीं. There was no one to like tell कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो यार, और like मेरे marks तो खराब ही आते थे as compared to everyone else. So वो भी कोई था नहीं motivating factor.
Like, where did you get this mental strength? This I want to ask, and this is what the children must know. कि आदित्य आर्य तुम्हारे में ये मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से आई कि यार ऑल इंडिया रैंक तुम टॉप, तब तक एनडीए का आ गया था फाइनल रिजल्ट, मेरिट आ गई थी? यस एनडीए तो पिछले साल 2020 में ही आ गया था। अच्छा, आ गया था वो। हाँ। वो मैं फीलिंग पूछना भूल गया, बट तब तक मेडिकल का तो यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड? यस मेडिकली आउट हो चुका था एंड रिजल्ट आया था, तो वी वर लाइक ऑलमोस्ट नम्ब काइंड, क्या सेलिब्रेट करे ना करे, इट वाज डिलेमा ही। और मन में खुश थे, लेकिन पता था इस खुशी का कोई ठिकाना, कोई फायदा कोई नहीं है। मतलब नहीं है। हाँ। इट डजंट ट्रांसलेट इनटू सक्सेस, तो क्या फायदा यस उस खुशी सो का? दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअली आई ब्रश्ड इट अपार्ट। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड, फर्स्ट है, बट दिस इज ठीक है, इट्स इनफ। I detached my identity completely from my previous identity. मैं वेरी दूसरा गुड। आदमी हूँ, and यस। that is how I started working. And even I would say this to anyone, कोई भी अगर किसी चीज के लिए दूसरा अटेम्प्ट या कोई नई चीज कर रहा है, don't see अच्छा पहले तो मैं ऐसा था, पहले तो मैं ये करता था, first I used to get results, first I used to do well वगैरह वगैरह, forget everything. It's a fresh start. एक छोटे 2 महीने के बच्चे की तरफ अपने आपको ट्रीट करो and grow accordingly. Like all my target was to grow. उस वक्त मुझे सीखना है and मैं like my parents, I told them कि ये सब मेरे सामने बाजा मत बजाया करो, don't tell this in front of me. कोई दूसरा आके बोले like ठीक है, all India rank 1 and all, it's enough, but in front of me refrain from all these things. And I made it very clear that my target is to crack JEE Advanced, and my entire focus was on that. And regarding mental strength, ऐसी कोई अनहोनी चीज तो मैंने कुछ पी नहीं है। आई फील इट्स ऑल गिवन बाय माय स्कूल। जो उन्होंने भट्टी में हमें जलाया है 7 साल, वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही ना। Great. Now I'm so happy कि most of the credit you give it back to your school. I do that very often, but in my life, तुम्हारे भी होएगा अभी, अब तो बच्चे हो तुम, a lot of credit I give it to my unit and the people I met after joining the army. स्कूल ने वहां तक पहुंचाया, और उसके बाद जैसे तुम अभी आईआईटी में हो, आईआईटी दिल्ली में हो, तो अभी आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो आपकी लाइफ को भी ना, अब तो जिंदगी पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगी तुम। अच्छा चलो, आईआईटी की बताओ, तुम तैयारी कर रहे थे, तो हाउ डिड यू क्रैक दिस एंड ये कैसे हुआ? सो वी वर इन द फाइनल फेज जो मैं बता रहा था। सो कोविड वेव आया, आई लाइक रैप्ड अप माय प्रिपरेशंस, और फिर उसके बाद मैं मॉक टेस्ट वगैरह जो उसका जो प्रिपरेशन है वो करने लगा। आई वाज फुली फोकस्ड। भाई वहां पे भी मैंने सेम स्ट्रेटजीज अपनाई। मतलब आई हैड इन माइंड माय एंटायर एनडीए प्रिपरेशन जर्नी विद माय सेल्फ। व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील लो, जब मुझे बुरा लगता था, आई यूज्ड टू रिकलेक्ट कि यार ये एनडीए में तो हुआ था मेरे साथ, दैट टाइम आल्सो ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी आई फेल्ट द सेम, बट आई बाउंस्ड बैक। And that is in that spirit I would take every like hindrance in my way. तो वो भी एक एडिशनल फैक्टर था मेरे मेंटल स्ट्रेंथ पे कि मैंने ये चीजें कर रखी हैं, बस फ्लेवर चेंज हुआ है। इट्स लाइक वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो अलग है, बट मोस्ट ऑफ इट इज हाउ यू फेस चैलेंजेस, हाउ यू डेवलप योर भाई। एंड मैच टेम्परामेंट भी तो चाहिए ना यार। उस दिन कैसा है, उस दिन फाइट कैसी मारते हैं? हाँ, उस दिन फाइट कैसे मारना है, नर्वस नहीं होना है, ये वो एंड एवरीथिंग। बहुत से बच्चे यार दे आर वेरी गुड, मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ऊपर, मेन टेस्ट में आते नहीं है। और हमारे से नलायक मेन टेस्ट मॉक में शायद कुछ ना करे, बट मेन टेस्ट में जो है माइंड इज फुल्ली एक्टिव। यस सो ऐसी प्रिपरेशन चलती रही। बीच में और भी हेल्थ इश्यूज वगैरह भी कुछ क्रॉप अप हुए थे, बिकॉज ऑल द टाइम आई हैड गिवन अप माई सेल्फ। सो इतना अपने आप को बर्न कर रहा था मैं, दैट माई बॉडी वॉज फाइंडिंग इट टफ टू अडेप्ट। सो उसके भी मैंने उपाय किए। आई रिस्ट्रिक्टेड माई डाइट, आई रिस्ट्रिक्टेड माई स्लीप, लाइक जो भी होता आई यूज्ड टू फाइंड अ काउंटर मैकेनिज्म। ठीक है, ये हुआ, अब से ये करूंगा, नहीं होगा, वो हुआ, अब से ये करूंगा, नहीं होगा। एंड जो भी आता आई यूज्ड टू जस्ट कट इट आउट कि अब ये दिक्कत आई, कट करो, ये दिक्कत आई, कट करो। एंड दैट इज हाउ आई केप्ट गोइंग। फिर आते हैं एग्जाम के दिन, जब एग्जाम वाज वेरी क्लोज। सो आई डिडंट नो वेदर आई कैन मेक इट ग्रेट, आई कांट मेक इट ग्रेट, बिकॉज पता नहीं चलता है। एंड एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग एट होम, कोई पीयर ग्रुप नहीं एंड ऑल एवरीथिंग, तो मेरे को कोई फीडबैक मिलता नहीं था दैट इधर आई एम डूइंग ग्रेट और नॉट। बस मॉक टेस्ट के नंबर पता चलते थे जो मेरे बहुत ग्रेट नहीं होते थे दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट में थोड़ा अप हुआ था, एंड रैंक प्रिडिक्टर वगैरह भी बहुत चीजें होती हैं कि अच्छा दे गिव यू मॉक टेस्ट, फिर रैंक प्रिडिक्ट करते हैं, अच्छा आपकी इतनी रैंक आई एंड सो ऑल। तो द डे बिफोर एग्जाम आई हैड टॉक्स विद माय पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। ज्यादा नहीं पढ़ा, मेरे को लगा जितना करना था 1 साल में किया। लकीली आई गॉट 1 year टू प्रिपेयर। आई फॉरगॉट टू मेंशन, अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया था, द एग्जाम पोस्टपोन्ड और अक्टूबर 21 में एग्जाम हुआ। सो आई हैड नो एक्सक्यूज टू से कि मेरा एग्जाम खराब गया बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम। मेरे को 1 साल मिल गया था। I went to the exam day
and with blessings of everyone, all my well wishers who were with me throughout the journey. And I thought ki why I'd give this constant self talk ki this I did even in NDA exam ki just I have to do my best. Other things you cannot even handle. तुम वही कर सकते हो जो खुद कर सकते हो, and don't stress up at any point. If you're stressed up, take a deep breath in and release out. Or if you're finding it too stressful, go to washroom and wash your face and come, if that is allowed in your examination case. I went with fresh mind कि चलो ठीक है, whatever it is. मेरे को जेई मेंस पे एनआईटी मिल रहा था, तो आई केप्ट इट टू माई सेल्फ, ठीक है कुछ नहीं भी होगा तो एनआईटी चले जाऊंगा. My father was me till the exam center, and he was also a bit nervous. I thought that everyone was कि क्या होगा, and I gave the examination. पहले एग्जाम से आया वापस, I wasn't very happy because मतलब वही होता है ना, हम हमेशा फुली सेटिस्फाइड नहीं होते कि ये क्या हो गया. लाइक द एग्जाम रियली हैपेंड. 2 पेपर होते हैं, मॉर्निंग वन इज 3 आवर्स, इवनिंग वन इज आल्सो 3 आवर्स. तो मॉर्निंग के बाद जब आया, आई फेल्ट लाइक आधा एग्जाम खत्म हो गया. जो 1 साल के लिए जिसमें तैयारी कर रहा था, आधा एग्जाम खत्म हो गया और बचा आधा ही है मेरे हाथ में. तो उस वक्त एक फीलिंग है कि शायद से पैनिक बटन दबता है ना कि अब क्या. बट आई डिडंट, आई होल्ड लाइक थोड़ा पकड़ा कि नहीं, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट अगेन, जो होगा देखा जाएगा. दूसरा पेपर भी दिया, एंड व्हेन आई केम बैक होम, पहले तो जाके आराम किया कुछ हफ्ते. मतलब पेरेंट्स ने ऑब्वियसली पूछा कि कैसा गया. आई रियली हैड नो आइडिया, बिकॉज मुझे उस वक्त इट वाज लाइक मैंने इतनी प्रैक्टिसेस कर रखी थी चीजों की, दैट काफी चीजें तो सबकॉन्शियसली मैं कर रहा था एग्जामिनेशन हॉल में. दिस वाज आल्सो हैपनिंग. आई डोंट नो हाउ, बट इट वाज हैपनिंग. लाइक फ्यू थिंग्स वर कमिंग सबकॉन्शियसली. कुछ चीजें मैं डेलिबरेटली कर रहा था, ऑब्वियसली आपको करना पड़ता है. तो व्हेन आई केम बैक, आई वाज लाइक आई रियली डोंट नो कैसा गया एग्जाम मेरा, अब पता चलेगा रिजल्ट में ही. आई वाज हैप्पी, एंड वन थिंग आई हैड केप्ट इन माय माइंड कि रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आई विल बी हैप्पी फॉरएवर कि आई वाज अ गुड फाइटर थ्रू आउट. ये बात मैंने एग्जाम से एक दिन पहले ही अपने आप को बोल दी थी, एंड दैट इज हाउ आई वाज कूल इन द एग्जाम. यू हैव डन योर बेस्ट. मतलब नो एक्सक्यूजेस, नो गिल्ट फीलिंग कि यार शायद मैं और पढ़ लेता या मैं टाइम नहीं वेस्ट करता. तो ग्रेट. हाँ, तो इस बात के लिए मैं अपने अंदर पहले से खुश था कि मेरे को जितना करना था, जो मेरे लिए पॉसिबल था, मैंने सब किया. अब मैं जाके एग्जाम दूंगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. दैट्स नॉट इन आवर हैंड. आफ्टर ऑल लाइफ इज अनसर्टेन, एज ऑलरेडी आई हैड लर्नड. कब आया रिजल्ट? कब आया रिजल्ट? आया दशहरा के दिन, 15th of October मॉर्निंग में, एंड इट वाज फार बेटर देन माय प्रेडिक्टेड रैंक्स एवर. एंड इट टर्न्ड आउट कि मैंने उस दिन काफी अच्छा किया था. आई हैड फुल्ली जो बोलते हैं जैसा पहले भी था, एंड दिस टाइम आल्सो इट हैपेंड दैट आई कुड डिलीवर माय बेस्ट. जो भी मैंने तैयारी की थी, आई कैन हैप्पीली से वो निकल गई थी एग्जाम में, जो एक एवरेज एस्पिरेंट चाहता है. एंड आई वाज हैप्पी दैट चलो ये वनवास सफल हुआ. What rank did you get? What rank did you get? Rank was in 2000 something, and I was happy for it. That I was very contented. And फिर उसके बाद you are getting first, तो ये था कि you are getting an IIT, है ना? That पहली feeling क्या होती है? पहली feeling is of satisfaction कि हाँ, मेरे केस में तो वही थी कि I was happy कि whatever has happened has happened for. I turned it to good even in the end. ऐसे खुश हो गया. And when did you come to know you are getting admission in IIT Delhi? It's such a prestigious institution. Yeah? Yes. So that was in like coming months, next month in November and all. तो वैसे फिर धीरे-धीरे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस चालू हुआ. So this bounce back from a low मतलब all India rank NDA में 1 and then medically unfit and then COVID and ये struggle, तुमने दोबारा एक plan B manufacture किया. There was no plan B in front of you. You manufactured a plan B and to land up in IIT Delhi. How did you feel when you entered the gates of IIT Delhi? कैसे लगा तेरे को? I felt really happy for myself that I could fathom this feat. Like ये तो तुमने सपने में सोचा नहीं था. तुम्हारे तो NDA का सुदान ब्लॉक नजर आता था. हाँ, यही सबसे पहला थॉट ये भी आया था. That had I asked myself एक साल पहले कि गेस करो अगले साल कहाँ पे होगा, I wouldn't have guessed मैं IIT में रहूंगा. It's just that चीजें होती गई and I kept doing them as they came. जैसे होते गया I would make a plan for next week, करने लग गया. एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई, कोई बात नहीं, डोंट क्रिप ओवर इट, फिर से एक वीक का प्लान बनाया, करने लग गया. एंड दैट इज हाउ सक्सेस. छोटा छोटा प्लान करते करते आई kept doing whatever was. धीरे धीरे करके वो
वही है ना, कंपाउंड हो गया बियॉन्ड माई इमेजिनेशन ऑल्सो। वो इतना कंपाउंड हो गया कि आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज कि IIT आ गए, एंड विद ओनली 1 year ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। तो मैं कह रहा हूँ हमारे स्कूल से हमने बहुत NDA IMA OTA पायलट्स तो दुनिया भर के हैं, बट आई हैव नॉट सीन मेनी our school cadets joining IIT, prestigious IIT. So this is so good, Aditya. What advice would you like to give? अब तो तुमने इतनी फाइट मार ली है लाइफ में, इतने कंपटीशन देख लिए हैं, कि प्लान भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 10th 11th के जो बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे तुम्हारा ये देखेंगे इंटरव्यू, व्हाट एडवाइस विल यू लाइक टू गिव? यस, तो ये मैं पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज हैव प्लान बी इन माइंड, एंड और थोड़ा बहुत एक्शन की, अच्छा ठीक है, दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट। ये नहीं कि बस प्लान बी नाम नाम का है, एंड व्हेन यू एक्चुअली कम टू प्लान बी यू सी कि मैं प्लान बी था ही नहीं इन एग्जिस्टेंस। सो हैव अ प्लान बी, कि थोड़ा तुम अपने मन में रखो कि ठीक है, आई वुड गो अबाउट इट। एंड ऑल्सो अपने प्लान बी को छोटा मत रखो, लाइक जस्ट बिकॉज यू हैव मिस्ड ए doesn't mean you would settle for anything less. Dream big every time. Like जरूरी थोड़ा ना बी ए के बाद आता तो ए से छोटा होगा। Does it even bother there? मतलब it's B, it's another shortcut glory. जो तुम करना चाहते हो फिर से करो। What if you फिर C करेंगे, but B करो तो पहले, give your shot to what you like. तो that is one thing I would obviously tell कि plan B होना चाहिए और plan B भी बड़ा होना चाहिए। Don't settle for less. Bada in the sense, I just mean to say, don't settle for less. Don't compromise ever. If you feel you can, you definitely can. And other advice I would give is, like, again, if anything happens and you are not able to make it, and you feel low, detach yourself from your previous identity. भूल जाओ कि तुम क्या थे, because that would make you feel bad again and again. Instead, rebuild yourself. इट इज वेरी टफ, आई एम सेइंग इट अगेन। मतलब मैं अगर अपना वीडियो खुद देखता 1 साल पहले और कोई ऐसे ज्ञानबाजी कर रहा होता, मैं नहीं मानता, बिकॉज इट इज नॉट इजी दैट टाइम टू एक्चुअली थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट इन हाइंडसाइट आई कैन डेफिनेटली टेल कि ऐसा सही में प्रैक्टिकल है। यू कैन डू वंडर्स इफ यू कैन जस्ट स्टिक टू योर की गोल्स, की एम्बिशंस, एंड लाइक वो वही ना रूट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, लाइक आई विल डेफिनेटली वर्क हार्ड एंड सिंसियरली नो मैटर व्हाट। इफ यू आर जस्ट डूइंग दैट, you can definitely achieve it. There's no stopping. No, I love this. Rebuild yourself. This is a so wonderful line you said. Ki rebuilding yourself, adapting yourself to the new challenges, and every time being positive. This, I think, ये पूरा का पूरा आदित्य तुम्हारा ना जो persona मैं देख रहा हूँ, it is because of the positivity that is there within you. कि to bounce back and bounce back strongly. Yes, bounce back, hit harder. This was written in my notebook forever. Like I used to write it down कि ये चीजें याद रहनी चाहिए। क्या लिखा था? Bounce back, hit harder. Yeah, bounce back, hit harder. Absolutely. हम बहुत साल पहले जब एक कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग ग्रुप में थे, तो हम बात करते थे हिट हार्डर, कंटिन्यू हिटिंग हार्डर। ये हम किसी और कॉन्सेप्ट में था हमारा, रिलेटेड टू पाकिस्तान, समटाइम्स वी आर प्लानिंग सम स्ट्रेटजी। तो ये लाइन मुझे पंच लाइन याद है, 15-20 साल पहले की बात है। हिट हार्डर, कंटिन्यू हिटिंग हार्डर। सो मतलब या पेडल फुल होना चाहिए, है ना, गियर भी टॉप होना चाहिए और पूरा प्रेशर होना चाहिए। गिव योर बेस्ट शॉट, है ना। वंडरफुल आदित्य। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ इन IIT Delhi? Sir, now it has been like first semester was online, so as we were at just jo classes and also the rest other things we could not enjoy much. And right now when I'm actually on campus here, it's going good. We are like, it feels I'm back to school because I'm doing everything what I used to like and what I had sacrificed in between. I'm back to debating, I'm back to quizzing, I'm back to like a good circle of friends, I'm back to being social again. Like I had to restrict myself in between. I didn't, like, you understand the situation I was in then. So I'm back to being a positive person. I'm back to enjoying exploring new things, and it feels great. Like the first year at IIT is suited in a way ताकि आपको हर चीज के बारे में पता चले, आप हर चीज enjoy करो, हर चीज experience करो. So I'm doing that. I'm trying hands at few things which are new to me, and that is how it has been. So great, Aditya. What a pleasure to talk to you.
from my school. I'm so proud that somebody like you is a product of Rashtriya Military School, Bangalore. NDA All India My rank pleasure, 1, sir. now IIT Delhi, and so positive. Teri ek baat, I must get you, to speak to my students who do courses with me someday on these lines. How to keep bouncing back and hitting harder and continue to be a positive person. How to work hard, cut yourself off from the entire thing, and Like going brick by brick. one thing I would particularly mention is that it is not important. It is not required to cut yourself out, and I don't suggest it to either. But the only problem in my case was that time was very less, and it was that demanding that I had to. So I say it as a like ये मजबूरी थी मेरी. I didn't wish it ever किसी के साथ ऐसा हो, किसी को ये पूरा ये करना पड़े and in this way. But I wish you always like keep doing as whatever you said. Maybe your destiny was taking you somewhere else, and I only know, but that I will keep hearing your name some later on in newspaper when Aditya Arya is CEO of some big multinational company or a big public sector undertaking, and then you look back at NDA and say, "यार अच्छा ही हुआ वैसे मैं जो है ना." So good, Aditya. What a pleasure to speak to you and to get in touch with you. And since you're in Delhi, I would love to meet you someday. Yeah, है ना? absolutely, sir. Even I look forward to. Yeah, we must meet up someday. ठीक है. So it was really wonderful talking to you, Aditya. I have no words to describe the joy of seeing a bright, young boy like you. You have miles to go before you sleep. Yes, and I wish this session will be helpful to other such people as well who find themselves in tough times but are finding a way to come through. Yeah, you have to have a plan B. मैं तो हमेशा मेरे से बच्चे पूछते हैं, मैंने कहा प्लान बी नहीं, प्लान बी सी डी ई भी होना चाहिए. You should have, must think, if not this then this, if not this then this. Always keep yourself, and what you said rightly is, but also prepare. सब दिमाग में सपने लेने से कोई फायदा नहीं है. कोई तो उसका मोटे तौर पे को खाका तो तुम्हारे पास होना चाहिए, है ना? And your capability of studying hard and you're good in studies, that helped you. If you're not good in studies, then life would have taken maybe some other turn. Yes, probably. Work hard, play sports, keep debating, keep taking this name of the school higher and higher, and good luck to you. Remain focused. Okay, we'll keep hearing good things about you. Thank you very much. Thank you, sir, for having me over here. A pleasure to be. Absolutely.